Dear students, welcome back to the e-classes of social science. This is your teacher Thakur Akash Singh Chauhan, and let me clear you that your social science book has been changed by Madhya Pradesh Board of Education. So this book has been changed by these 4 books. All right, which are the books? Let me tell you one by one. This is economics book. Then next is democratic politics, जिसके अंदर हम civics पढ़ेंगे. And then India and the contemporary world. Okay, India and the world. Then fourth is contemporary India. So these particular 4 books will be there in your course this year. So today we'll take one of them, which is democratic politics. So let us understand so this is NCERT pattern, NCERT. This is your book. So here 5 chapters are given. ज़्यादा नहीं है, don't worry. Chapter 1, what is democracy? Why democracy? So these topics we have already understood, but again, since the book is new, we have to go through it once more. What is democracy? Chapter number 1 we have to go. Here it is. What is democracy? So you have already read about different forms of government. In last classes we have understood about governments, जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है. किसी में किंग्स रूल करते हैं, किसी में डिक्टेटर रूल करता है, किसी में गवर्नमेंट होती है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट the democratic governments and non-democratic governments. So first of all, let me define what is democracy, and here is a question given: why to define democracy? So before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Lingdo responds to her questions as other classmates joins the discussion. So here is some discussion given. So this is a new way of explaining something like real life situation जो किसी को हो सकते हैं, जो doubts किसी को हो सकते हैं. So this is an example actually given in your book. So one of the student is asking to her teacher, "Ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example?" So Mary is asking to the teacher that जो हम समझ रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, इसमें आपको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि पहले हम डेमोक्रेसी को समझें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, एंड देन हम एग्जाम्पल्स पर बढ़ें. सो व्हाट अ टीचर सेड, शी सेड, I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, and or love. Do we wait to have a definition of these particular words before we use them? Come to think of it. So, do we have clear definitions of these words? It is only using a word that we understand its meaning. So, what the teacher said, that means for defining everything is not necessary, because in real life situation we use many things like this is a book, copy, pen, pencil, etc. We don't define them. We know that what is a book, what is a pen. So definition is not too much required. Mary, but then why do we need definitions at all? तो फिर
हमें डेफिनेशंस चाहिए क्यों, हम जिस भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन पढ़ते ही क्यों हैं. What teacher said, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloudburst. So same is true for democracy. We need to a clear definition only because some people use it for different purposes, because very different kinds of governments call themselves democracy. So why do we need democracy? Definitions was asked by Mary. So what teacher is saying? She is saying that uh, some common things जो हम डेली यूज़ करते हैं उनकी definitions की ज़रूरत नहीं होती, but if for example rain is there, so rain, say, drizzle, cloudburst, these are the different types of rains. यानी कि रेन या आंधी तूफान के साथ रेन, या वी कैन से जो बादल फटते जिसमें बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. सो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ रेन्स नीड्स डेफिनेशन, जिसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होता है. सो हियर इन डेमोक्रेसी ऑल्सो देर इज़ अ कन्फ्यूजन, यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है वो खुद को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी शो करती है. सो फॉर दैट्स वाई वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी, एंड सेम इज़ द केस विद एवरी अदर डेफिनेशन. डेफिनेशन की ज़रूरत उसी में पड़ती है जहाँ पर किसी चीज़ को क्लियर करने की, यानी कि क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होती है. सो फॉर दैट वी यूज़ डेफिनेशंस, वी डिफाइन देम. सो अनदर स्टूडेंट इज आस्किंग, रिब्यांग, why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is the government of people, by the people and for the people. So we in Meghalaya always rule ourselves. That is acceptable by everyone. Why do we need to change that? So if there is a definition given by any famous personality, and we he belongs to this person who is asking belongs to Meghalaya, and so he asking that हमने हमेशा ही खुद को रूल किया है, so हमें क्यों ज़रूरत है, एंड वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, लाइक वी हैव रूल्ड, so why we need to change that? So the teacher is saying, I am not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful. So definition को change करने की ज़रूरत नहीं है, because this definition is very beautiful. But we know that if this is the best way of defining, unless we think about it ourselves, we must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. So another student is asking, ma'am, can I suggest you something? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word which is demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy means by the rule by the people. So this is correct meaning, I think. So we don't need a debate. यानी कि इसका जो मीनिंग होता है वो रूल बाय द पीपल होता है. ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, एंड इसका मतलब है रूल बाय द पीपल. तो हम इस चीज़ पर वाद विवाद ना करें, दैट मीन्स हम डिबेट ना करें. आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन. सो टीचर इज सेइंग दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल, एंड आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. ये हमेशा वर्क नहीं करेगा. वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो हमेशा वर्क नहीं करेगा, वो हमेशा आपको बेटर आइडिया नहीं देगा. सो अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, यानी कि वो उसके ओरिजिन से ही टाइड नहीं रहता है. जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स. ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग. कंप्यूटर्स पहले कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होते थे. जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सम्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा टफ होते थे, उनके लिए पावरफुल कैलकुलेटर्स होते थे. एक्चुअल में पावरफुल कैलकुलेटर्स को ही हम कंप्यूटर्स बोलते थे. बट नाउ डेज दिस कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन हैज़ बीन चेंज कंप्लीटली. यानी कि आज हम कंप्यूटर को not only for we use it not only for calculating something but or computing something, but we use it for writing, designing, listening music, watching films, playing games and so on. But the name, जो origin name है computing, वो उसका आज भी वही है. So the origin name cannot give us the definition. That's what teacher is saying. So another student is asking, the Mary asking, ma'am, so basically what you are saying in
is that there is no shortcut to our thinking about the matters ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. So teacher said yes, this is right, there is no shortcut, we have to go through the definitions so that we can understand it in a better way. So this is the real life situation, एक स्टोरी के रूप में बताया हुआ है कि हमें क्यों डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वाई डू वी डिफाइन एनीथिंग इन सोशल साइंस और इन एनी अदर सब्जेक्ट. नाउ let us understand the meaning in a very short line or short way. Let me define it. So what is a democracy? So it is given, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This is the very basic definition of democracy. यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर रूल करने वाले लोग गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं. दैट मीन्स द पीपल, दोज हु आर रूलिंग आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल. दैट मीन्स इनडायरेक्टली द रूल इज नॉट डन बाय द रूलर्स, बट इन फैक्ट actually it is done by the people only. So this is very short and sweet definition of democracy. So many examples are also given, like democracy यानी कि लोगों का शासन. इसके अलावा now we are thinking कि इसके अलावा क्या होता होगा. So in our country this is democracy. Democratic government है हमारे इंडिया में, we have democracy. But in other countries, many countries जहाँ पर dictatorship चलती है. Dictatorship means वहाँ पर एक ही शासक होता है एंड अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग हैपन्स. वही जो बोलेगा वही सब कुछ होगा. बट हियर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, इफ सपोज आवर प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू डू समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, सो पीपल विल स्टार्ट अपोजिंग एंड आवर PM हैज़ टू चेंज हिज डिसीजन. सो बट इन डिक्टेटरशिप जो डिसीजन वो लेना चाहेगा वो डिसीजन डिक्टेटर लेगा. डिक्टेटर इज रूलर, सो वो उसके हिसाब से डिसीजंस लेगा. बट इफ समवन अपोजेस, अगर कोई उसको अपोज भी करता है तो वो अपना डिसीजन चेंज करने के लिए बाध्य नहीं है. ही इज नॉट फोर्स टू चेंज हिज डिसीजंस. इनफैक्ट उन लोगों को शायद वो सजा दे दे उल्टा, जो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उसके विरोध में बोल रहे हैं. सो these are this is something very important. This concept of democracy is very important, not only in our country but other countries also. So that's why today maximum number of countries have adopted this particular rule, यानी कि democratic form of government. Kingship is almost over, यानी कि जो पहले kings वगैरह होते थे वो अब नहीं मिलते हैं. So this is it for today. In short, I said you about introduced about democracy, and also you are introduced with your new books. So we'll go further in next class. Thank you.